friends, this is B.L. Joshi, a soft skill coach and image consultant. दोस्तों, आपकी जिंदगी में आपको कभी मौका मिला है कि एक छोटे ग्रुप के साथ कुछ बात करें या 50 लोगों के साथ बात करें या और बड़ा ग्रुप हो जिसके साथ में बात कर रहा है, जिसे हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जब मिली, ये मौका आपको मिला, तब प्रोबेबली यू मस्ट हैव फेस सर्टेन चैलेंजेस. और वो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मैं जाके सबके सामने बात करूंगा तो मेरी अगर कुछ गलती हो जाए तो पीपल विल मेक फन ऑफ मी. मुझे जो कहना है अगर वो मैं भूल गया तो, अगर मेरी आइडिया जो प्रेजेंट करने का है उसके अलावा मैंने कुछ बात की तो these are all the challenges probably you must have faced. दोस्तों, हमें पब्लिक स्पीकिंग का डर तो हमेशा लगता है, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी चीज का शायद हमें फियर होता है, डर होता है. और उसमें से स्पाइडर हो जिससे हमें डर लगता है, कॉकरोच हो, एक डार्क रूम हो, हमें डर लगता है. और प्रोबेबली ये डर, ये फियर कहां से आती है? तो हमारी अपब्रिंगिंग से ये फिगर आती है क्या? प्रोबेबली द आंसर इज यस. क्या होता है, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सीनियर सिबलिंग्स ने, हमारे टीचर्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने आज हमें शायद बताया कि देखो, स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना, स्ट्रेंजर ने कुछ स्वीट्स दिए वो एक्सेप्ट नहीं करना, डार्क रूम में नहीं जाना, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. और दैट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड फियर इन आवर माइंड. अभी थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग हमें जन्म से ही कुछ फियर होते हैं क्या? और द आंसर इज यस. हमें दो चीज के फेयर होते हैं, और वो दो चीजें होती है. एक तो कोई अगर बड़े आवाज से बात करे, लाउड वॉइस इज वन ऑफ द फियर, एंड द सेकंड फियर इज फॉलिंग डाउन. ये बचपन से हमें, राइट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न, वी हैव गॉट दिस फियर्स. लेकिन दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द लाइफ. टुडे वी हैव नॉट टू गेट स्केयर्ड व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट. लेट अस फॉरगेट अबाउट द पास्ट and let us accept the skills of the public speaking. Let us learn the skills of the public speaking. Let us master skills of the public speakings. आज मुझे एक चीज कहनी है कि हम लोग बिजनेस में, प्रोफेशन में है. टुडे ऑल्सो वी हैव गॉट सम ऑफ द फियर्स, दैट इज टॉकिंग टू द स्ट्रेंजर्स. दूसरे आदमी के साथ ना जाना ना पहचाना, उससे कैसी बात करें? फियर ऑफ रिजेक्शन. अगर मैं कुछ मांगू और नहीं मिला तो दैट्स गोइंग टू बी अनदर फियर. एंड द थर्ड फियर इज फियर ऑफ अथॉरिटी. व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग, इज माय अथॉरिटी बीइंग चैलेंज्ड? ये भी फिगर हमें आती है. एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न दिस. दोस्तों, आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज डेज, I used to get scared of the public speaking. Whenever the teacher or the faculty used to call me to speak something about some small subject, I used to get scared about this. There was a tremendous fear. My throat used to become a dry. This was the biggest challenge. But I'll tell you, a public speaking can be learned. It's a technique. The way we learn so many other things, we can learn the public speaking. And some of the important things in the public speaking is your preparation, the content, the way you start, the body of the speech, and how you close the speech with the punch, with the message, with the call for the action. There are certain important things as how is your stand, your posture, your facial expressions, your gestures, your voice modulation, and your body language. You can definitely improve upon this. And let me tell you, there is a process, and in that process, the three things are very important. The first thing is expectancy. Always expect the best from yourself.
believe in yourself that you are going to deliver the best. And for this, you will have to apply a visualization technique. You can always practice in front of a mirror. You can always practice in front of your friends or your family members. They will tell you what is right and what is to be corrected. So expect the best from you. And in NLP, there is a technique of visualization. Please learn and apply that technique. The second thing is exposure. Friends, when you want to become a public speaker, a great public speaker, wherever the opportunity comes, you will have to encash that opportunity. Maybe in a small function, you have been given an opportunity to give a preface of the subject, to give an introduction of a keynote speaker or a chief guest. You have been given to speak on the agenda. You have been given an opportunity to propose vote of thanks. These are all very small things, but it's a matter of exposure. Encash it. Whenever you get an opportunity, be ready, be confident. Tell yourself that, yes, I am going to do it. So make the best use of the exposure. And the third important thing is experience. It's a matter of experience, dear friends. You have to have this experience, and whenever you come across there are some challenges, never hesitate to ask for the help, for the support, for the assistance, for the guidance. Take the support and guidance from those who are expert into it. Follow them in toe, apply your own mind also, and have this experience. I am confident if you apply this 3-step process, you will be one of the best public speaker, and everybody will be keen to listen to your word of wisdom, and they will not only listening to you. Whatsoever call of action you are giving to them, they will be prepared to accept it. So my heartiest compliments and all the best for you to become one of a voracious speaker, and believe me, you can do it. In case of any assistance, you can always rely on us. Wish you all the best. Thank you so much.